Part 6 on the feeling of immortality in youth. Hazlitt further states that at times when we understand the ravages of time, we find it appealing to live in that single moment to its fullest and complain how slowly time moves. But it won't be long enough for us to see how quickly the time has passed. टाइम जैसे जैसे बीतती है, मैंने अभी भी जिक्र किया था 10 साल, अरे 10 साल कैसे निकल गए, होता है ना। तो वो एक सिंगल मोमेंट में तो जीना, और जो भी बहुत खुशहाली और अच्छा समय हो उसमें जीना सरल है, और उस समय तो लगता है टाइम बहुत धीरे निकल रहा है। बट जब पता है कि समय तो टाइम तो अपने हिसाब से ही बीतता है। Hazlitt mentions his own experience of youth when he participated in the French Revolution, the fit of the moment, the vigor of youth, but at the end he only saw bloodshed. For my part, my hopes fell. Up, see, there is this personal touch coming up when Hazlitt says that describes his own experiences of youth. He says that he participated in the French Revolution, and it was that moment when he felt very energetic, where he felt very lively, and he was ready to participate. But then the ideals of the French Revolution dwindled when he saw only bloodshed. धीरे धीरे जब आशाएं समाप्त होने लगी, फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्लडशेड में बदलने लगा, तो हैजलिट को भी अपना यूथ का एक्सपीरियंस न याद रखने वाला लगने लगा। Hazlitt then talks of how he forms an opinion on youth, recollecting his past experience. He realizes that one cannot be satisfied, for it has to leave something behind which is of value to this earth. This marks the uncertainties and fears that come even in the transitional phase. All the reckless, careless, imperious attitudes fade, and a fear grows within that may not leave anything of value to this world. हैजलिट बताते हैं कि यंग होते हैं तो कैसे ओपिनियन फॉर्म करते हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंस का जिक्र करके वो बताते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो हमें इस अर्थ के लिए वैल्यूएबल बना दे। ऐसी कोई अनसर्टनिटीज, ऐसी कोई फियर्स, ये सब जो है वो ट्रांजिशनल फ्रेज में है, और ये जो एटीट्यूड्स हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती हैं जब हम रियलाइज करते हैं कि हमारी जिंदगी क्या ऐसी ही चली जाएगी, क्या हम इस वर्ल्ड को कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे। दैट मेक्स इट वेरी important. As one grows old, the essence of time becomes very vivid. Nothing seems to have changed, but in reality, we become the examples of change. The only thing we can expect now is little of ill health and suffering, and then peacefully we can retire to our graves. Old age आते आते टाइम का सेंस, अरे टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, ऐसी फीलिंग आती है, और वो जो चेंज है हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जो ओल्ड एज में आता है वो है इल हेल्थ एंड सफरिंग। उसे हमें याद रखना होता है जब तक कि हम हमारी समाप्ति की ओर नहीं जाते हैं। The thought of death now does not frighten us, for we do not die wholly at our deaths. We have molded ourselves throughout, faculty after faculty, interest after interest, attachment after attachment disappear. We are torn from ourselves while living,
Year after year sees us no longer the same, and death only consigns the last fragment of what we were to the grave. When we realize that we are about to die without leaving anything of value to this world, what happens? We feel we are of no use. The thought of death does not frighten us. We know that lived life to the full. We shed our interests, we shed our attachments, and we gain maturity year by year, and we ready ourselves to die.